कंज्यूमर को आप बताइए कि फैंसी ज्वेलरी होती क्या है? A fancy shape means solitaire, a diamond shaped in square, which is called princess. Shaped like a water droplet, which is Oh, called pear. Shaped like बहुत famous. heart shapes. Yeah, that's a very Then fun. there are so many shapes which people don't know about. Escher cuts, cushion cuts, Oh, and then trillions, which is like a triangle. Up diamond starts from D, color starts from D. okay. Yeah, there's nothing as A, B, and C. Color starts from D. Okay. D is the best. It's the purest. It's the whitest. Okay. So D, E, and F color they fall in the same category. Okay. That's called colorless. Okay. Then G, H, I, and J. From G to J, it's nearly colorless. And then K means a tinge of yellow starts and then goes on. The more down you come. Welcome back, everyone. Today we are back again, diving into the diamond industry and the jewelry industry. I have with me is Jackson from MC Jewels, Delhi. And how are you doing, Jackson? I am doing great. I love his watch, by the way. Can you zoom in on his watch? Why? I'm just kidding. I'm just kidding. You can show the watch later. So we were just talking about diamonds and how it has been a very controversial topic in recent times because of lab grown diamonds coming in Yeah. the picture and still finding a place. I would say I'm not against lab grown diamonds, but it has a different segment towards it. It is for the masses and let it have its own course. तो यार इसको बाजू में रखते हैं, हम आते हैं हमारी चीज पर, वो है नेचुरल डायमंड्स. Yes. Natural. तो मुझे एक चीज जाननी है, व्हेन समवन इज बाइंग नेचुरल डायमंड्स, Right. should they go for a certified diamonds versus a non certified diamond? See, everybody has their own perspective. Everybody has their own understanding, their own homework towards how they want to go with the buying. Yeah. My personal opinion suggestion to people is go with certified diamonds. Okay. And what is the difference? What are the setbacks if you don't buy a certified diamond? See, what happens is आज आपने एक certified solitaire लिया. हाँ. You go to a jeweler. Hmm. For example, you come to me. हाँ आया. You ask for a 1 carat solitaire. Hmm. मैं आपको एक particular price के अंदर supposedly I am offering you I color VS1 solitaire. Hmm. On the other hand, I am offering you a non-certified solitaire. Hmm. अब वो non-certified solitaire till the time it is not of the same color and purity and the same characteristics as natural as the certified one. Hmm. अगर तो वो same होगा तो obviously I will certify it and sell it. Hmm. A lot of jewelers says कि मैं आपको better price के अंदर I can offer you a solitaire, ये भी इसी color purity का है, Hmm. but eventually वो होता नहीं है ऐसा. Hmm. वो उसको बोल देते हैं कि ये भी आई कलर ही है, ये नॉन सर्टिफाइड है, इसका प्राइस कम है. Hmm. सर्टिफाइड डायमंड्स के साथ क्या होता है कि एक आपको पर्टिकुलर एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक ऑथेंटिकेशन लेटर मिलता है, Hmm. अ ट्रस्ट वैल्यू, इट्स अ पीस ऑफ ट्रस्ट. Hmm. दैट पेपर इज अ पीस ऑफ ट्रस्ट. आप कल को सर्टे को ले जाके ग्लोबली ऑल्सो इफ यू वांट टू सेल इट, Hmm. एटलीस्ट यू हैव अ पीस ऑफ पेपर विच स्टेट्स इस डायमंड के अंदर ये लेजर नंबर है, ये पर्टिकुलरली इस लैब से सर्टिफाई हुआ है, दिस इज द कलर, दिस इज द प्योरिटी, ये इसके कट्स हैं. Hmm. सो देन दैट थिंग होल्ड्स अ वैल्यू. Hmm. फॉर एग्जाम्पल हम रियल लाइफ में लेते हैं, अगर हम कोई एक हाउस परचेज करते हैं, Hmm. अ हाउस विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्ट्रार Hmm. इज कंसिडर्ड टू बी सेफ. Hmm. और एक घर ले प्रॉपर्टी लिया. व्हिच हैज सम बिना लीगल उसी के घर ले इश्यूज, लिया. तो फिर देन दैट्स द हाँ, that's प्रॉब्लम, an राइट? issue, yeah. सो दैट्स हाउ तो it एक goes. और चीज है ना यार, सर्टिफिकेशन पे अब बात करते हैं. राइट. इन सर्टिफिकेशन काफी companies here in the jewelry industry, GIA, IGI, and many various companies which are doing this certification. Certification labs And- all over the world, yeah. So, which are these companies which are universally accepted certificate companies for diamond? सी ना, दैट्स द पॉइंट कि बहुत सारी लैब्स हैं जो कि यूनिवर्सली ग्लोबली लोगों के साथ एक्सेप्टेड हैं. Few are upcoming in the market. Yeah. It's more which has more royalty and which has more brand value. GIA is considered to be one of the top in the world in terms of solitaires. Okay. IGI is considered to be one of the best in solitaires as well as jewelry. Okay. अब GIA jewelry certify नहीं करता. GIA does only jewelry. Okay. Sorry, only diamonds. Okay. They certify only solitaires. Okay. IGI does jewelry also solitaires. Okay. Same way, GIA is from America. GIA versus IGI. Yeah.
ओवरऑल टर्म्स डायमंड ज्वेलरी में क्या Right. डिफरेंस पड़ता है और दोनों का क्या मतलब व्हाट इज द डिफरेंस इन द सर्टिफिकेशन क्या है उसमें मतलब See, there is no difference. आज आप ब्लड टेस्ट एक लैब से कराओ, दूसरे डॉक्टर के पास से कराओ, इट्स द सेम थिंग, ऐसा है राइट? Yeah. वो ये नहीं बोलेगा कि आप बी पॉजिटिव हो तो आप ओ नेगेटिव हो, राइट? इट्स द That's सेम. true, that's true. अब पॉइंट क्या होता है, सबके ना सर्टिफिकेशन क्राइटेरियाज होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं. Hmm. Mostly a major difference between GIA and IGI is it's a 1 point difference in color or purity at times. Okay. IGI जिस सॉलिटर को supposedly I color बोलेगा, GIA can say it J color at times Okay. because उनके color grading norms are much more stricter than IGI. Hmm. That does not mean कि IGI उसको गलत grade कर रहा है. Hmm. सही है समझा So मुझे. that is the only minor difference. Otherwise, they're exactly on the same line. टॉकिंग अबाउट कलर Yeah, और कंज्यूमर को हेल्प करता है ठीक है yeah. Consumer को help करो. अभी ठीक है. कंज्यूमर को हम बताएंगे कितने इन वेरी ब्रीफ Yeah. व्हाट आर द रेंज ऑफ कलर व्हिच यू टॉकिंग अबाउट आई जे कहाँ से शुरू होता है व्हिच इज द हाईएस्ट व्हिच इज द लोएस्ट इफ यू कैन गिव इट इन अ शॉर्ट So what are we talking about? द Diamonds. डायमंड कलर Diamond starts from D. Yeah. Color start from D. ओके Yeah, there's nothing as A, B, and C. ओके Color start from D. ओके D is the best. It's the purest. It's the whitest. ओके So D, E, and F color they fall in the same category. ओके That's called colorless. ओके Then G, H, I, and J. From G to J, it's nearly colorless. परफेक्ट And then K means a tinge of yellow starts and then goes on down. ओके The more down we come, जैसे जैसे हम इसको OP के बाद once we start converting towards Z color, then that going towards fancy yellow. येलो ओके So then Z does not mean bad. ओके Z means dark yellow, that is fancy yellow. ओके And Z का जो diamond होगा, which is fancy yellow, is going to be equally good, equally priceable as D color. Oh, so Yeah. coloring grade is in a wider scale, but it's not a linear scale. Yeah. It is very relative. Yes. Oh wow! So I don't think even I did not know that, to be That's honest. correct. So one thing which I was going through your Instagram, तो Yeah. आप है ना काफी fancy jewelry में हो. Right. तो कंज्यूमर को आप बताइए कि फैंसी ज्वेलरी होती क्या है? Fancy jewelry, okay. There are two ways. एक होता है basic classic jewelry, जो हमारे आज से बहुत साल पहले हमारे mothers used to wear. Then obviously different designs, more innovative jewelry with color stones. ये चीजें develop होनी शुरू हुई, designings market में आनी शुरू हुई. And then with technology, with science, with study, we started coming up with fancy shaped diamonds. Okay. अब एक होता है classic basic round diamond. हाँ. Then we come up to fancy shaped diamonds. Yeah, these are very much have a lot of existence in the American market. Now you can say not only American, all over the world. Wow. People are going crazy about Okay. it. Now fancy shape means a solitaire, a diamond shaped in square, which is called princess. Shaped like a water droplet, which is Oh. called pier. Okay. Shaped like you can say like a boat. The which heart is shape one marquise. is also very famous. Heart shapes. Yeah, that's a very Then fun. there are so many shapes which people don't know about. Escher cuts, cushion cuts, Okay. and then trillions, which Okay. is like a triangle. Oh. अब now jewelry, जिस jewelry के अंदर ये सारे diamonds, हम fancy shape के diamonds लगाते हैं. Oh. पान लगा रहे हैं. In Okay. Hindi it is called पान, English में it's called pier. Okay. Yeah. पान Okay. marquise लगा रहे हैं, emeralds Okay. लगा रहे हैं. Okay. जब हम ये सारी jewelry के अंदर ये सारे different shapes use करते हैं, so then that is fancy shaped jewelry. Okay. Fancy jewelry means Okay. designer jewelry, Okay. but with fancy diamonds. Okay. So then that is solitaires and diamonds with different Different shapes. shapes. Wow, that's amazing. So डायमंड के ऊपर तो बात चलती रहेगी. Right. अब थोड़ा आते हैं जो थोड़ा आसमान तक पहुंचा हुआ है सोना. Right. ठीक है. तो गोल्ड what I wanted to know is you deal with a lot of Gen Zs. Right. According to you, Gen Z सबसे ज्यादा कौन सा कैरेट का सोना खरीदते हैं? 22 versus 18 versus 14. I would say what I have noticed is Gen Z morally go for 14 karat gold. Okay. It's much more affordable. हाँ हाँ. And then when you talk about diamond jewelry, 14 karat, obviously, 1 point, it's affordable. Second, it's considered to be better in diamond jewelry because 14 karat की strength जो होती है compared to 18 and 22 is more. Okay. आपके diamonds कभी नहीं निकलते. The jewelry stays strong. It stays durable. Okay. So I think it is
for a long term perspective as well. Yes, You correct. can wear it way more often. Like way अगर more आपने देखा daily wear होगा के लिए भी हमारे, पहन सकते हो, बाहर जा रहे हो, like during sports, like cricketers, या like you can wear it during sports, आपने playing क्रिकेटर्स को paddle. देखा होगा, वो क्यूबन चेन्स पहन के रखते हैं और दे हाँ एट टाइम्स दे आर हाँ, वेयरिंग बैंड्स इन that's देयर true, that's हैंड. true, that's true. That is more of 14 carat. It's more durable. Okay, Yeah, because of its strength. okay. Yeah. Or let's compare this to old generation versus Gen Z. कौन से कैरेट की? Gen Z तो 14 कैरेट. ओल्ड जनरेशन कौन सा कैरेट ज्यादा प्रेफर करती है? See, I'll tell you, सबका अपना perspective है. No offense to our elders and our ancestors, and no offense to the young generation also, like me and like you. या हमारे एंसेस्टर्स ना हमेशा कहते थे कि भाई 22 कैरेट का सोना लो, हम्म, प्योर लो, हम्म, 22 कैरेट सोना लो, हम्म, बिकॉज वो हमेशा रेकमेंड करते थे कि उसकी वैल्यू होगी, वो हाँ. अप्रिशिएट करेगा, दैट इज मोर और वो प्योर टाइम फॉर्म के ऑफ लिए वो गोल्ड. सही था, वो सही था और वो आज भी सही क्योंकि है. 10,000 का नहीं, तभी 10,000 का सोना था, तभी आप इतना सोना खरीद सकते थे. अब आपको इतना सोना आता है. सी आई टेल यू, माय फादर यूज्ड टू गो टू बॉम्बे फॉर मैन्युफैक्चरिंग. तो एक टाइम था कि जब 3 से 4 लाख रुपए किलो सोना होता था. क्या बात है. तो आप सोचो कि 40 लाख रुपीस के अंदर 10 केजीज गोल्ड, और आज 40 लाख रुपीस में अप्रोक्सीमेटली 450-500 ग्राम्स गोल्ड. या barely anything. तो आप डिफरेंस देखो क्या है. पहुंच गया है. आज की हमारी यंग जनरेशन की एक्सेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स 18 एंड 14 इज मच मोर देन 22. ओके. वो इस चीज को नहीं देखते कि भाई हमने इसको एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है, कि भाई हम इसको येलो, हमारे को येलो ज्वेलरी पहननी है. हाँ. दे वांट टू गो इनटू फैंसी ज्वेलरी, या मोर टुवर्ड्स वाइटर टोन, Investment मोर aspect टुवर्ड्स है. येलो. investment aspect, definitely it is always going to be there for gold, Yes. but they also care about the aestheticism, how Right. aesthetic it is, how fashionable it is, how confident they're making me feel. So I think jewelry, what is meant for, is getting sold for now. See, jewelry, it's a piece of luxury. It's a statement. Hmm. Not everyone can afford it. Not everyone can wear the best of the jewelry that one can wear. True. So Gen Z is always more about, they want to wear fancy jewelry. They want to wear which is something which is standing out. हर बंदे ने ना पहना हो. Usually everyone's wearing more of gold, more of basic designs. That is true. Yeah. So that's how it goes. वही like that. Cartier love bracelet. अब वो क्लासिक चीज है. हाँ, Everyone's wearing. wearing that, yes. अब वो कार्टियर की वजह से ही, बल्गारी के ब्रेसलेट्स की वजह से ही, that yellow tone has still come back to the Gen Z. Yes. They are still adapting yellow That's true. because of these brands. That is Van true. Cleef के bracelets, That's true. they are more into yellow. That is true. So अभी तो हमने डायमंड एंड गोल्ड डिस्कस किया. Right. अभी डायमंड और गोल्ड साथ में बात करते हैं. So lot of people say natural diamonds are not an investment, but I do not believe that either. What would you say in a perspective, gold as an investment versus natural diamond as an investment? How would you define? See, Shan, I'll tell you one thing. When we talk about investment, we have to understand, इस वर्ल्ड में ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसको आप आज इन्वेस्ट करो एंड आफ्टर 10 days यू से दैट इट हैज गिवन मी लॉट ऑफ प्रॉफिट्स. Yeah. इन्वेस्टमेंट मीन्स आपने आज इन्वेस्ट किया है, यू हैव टू गिव इट फ्यू ईयर्स. नाउ इफ वी टॉक अबाउट डायमंड्स और इफ वी टॉक अबाउट गोल्ड, आज आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करोगे, दैट्स मोर लाइक अ कमोडिटी. Yes. आप इन्वेस्ट करोगे, यू लीव इट डाउन फॉर 2-3 years, 4 years, इट विल गिव यू रिटर्न्स. ऑन द सेम हैंड, आज आप डायमंड्स में भी इन्वेस्ट करो, leave it for few years, wear it in terms of jewelry, it will give you returns. I feel हमारे ancestors, whether it's my mother or my grandmother, उन्होंने भी अपनी diamond jewelry आगे forward करी to their daughters or daughter-in-laws. Definitely. वो इसीलिए forward करी because that was holding value. It is giving you a return. Investment तो वो भी है. पर ऐसा कभी नहीं होता. पहली चीज तो कोई सोना भी नहीं बेचता. Right. Diamond तो दूर की बात. So people don't usually sell their diamond which are valued. It's more of a emotion which people pass on to people who were they're close to, maybe daughter-in-law or their daughter or anyone in their family. So investment is in the value which we have paid for it. Right. And if they have to sell it, they will get that value. Gold also people say कि यार investment है, return on investment है, but कभी किसी को मैंने सोना बेचते हुए देखा नहीं, unless until उसको लोग बड़ा सोना बना रहे हो. Right. So the investment perspective which people see for other things in world is very different, and the investment perspective which people should have for jewelry should come with a different mindset. और एक चीज मुझे जो समझनी थी, even Right. though the
natural diamond prices have fallen because of lab grown diamonds, or whatever the uncertainty is in there in the global market as well, uh, will natural diamonds bounce back, or do you think they're going to go lower? No, 100% they will bounce back, and they have started to bounce back. The prices have started getting revised, Stabilized, yeah. stabilized हो गया है, and they are gonna come back. Hmm. See, lab grown diamonds, agreed, they are, in terms of look, they're exactly the same. You know, it's said that they have the same shine, the same fire, the same durability. But then there is a touch of human, it's man made. आज आप एक चीज देखो कि आज किसी, for example, my father, he passes me on his Mercedes or his Ferrari. Yeah, crazy. So for a boy, it's like, you know, for a guy, it's Yeah. like कि यार एक वो emotion है. हाँ, It's been carried forward to me. yeah. Same with diamonds. When a mother passes on her diamond jewelry to her daughter or to her daughter-in-law, it has a value. Yeah. It's that emotional value Yeah. which is passed on, कि उसको पता है कि Right, कभी कुछ भी emotional होता values है, होती हैं. which I mean definitely things which people don't say, but अगर कुछ भी होता है, मेरी बेटी के पास एक इतना valuable diamond है. अब वो valuable आपने क्यों बोला? Because jewelry is considered to be like an asset. Yes. Jewelry, whether you talk about diamonds, I would say natural diamonds specifically, Yeah. and gold, Hmm. it has always been an appreciating asset. हाँ, So when you talk about something which is appreciating, that is an investment, हाँ. and it's considered best. एक मैं पार्टी में था, ठीक है. So I was partying in Bombay Okay. with my friends, and one of these guys comes and asks me कि यार डायमंड की तो 2-3 साल बाद क्वालिटी खराब हो जाती है, येलो हो जाती है. So Okay. my question to you is, क्या डायमंड पहनने से, यूज करने से येलो होता है, या क्वालिटी डिक्रीज होती है विद 2 years, 3 years और 10 years स्पैन? आपने एक ये phrase सुना है, diamonds are forever? या उसका वो पता है क्यों बोली गई ये चीज? डायमंड जब अर्थ की क्रस्ट से आता है ना, and when we cut and polish it and give it the shape, and Yeah. when it's ready, या उसको आप 1000 years के लिए भी एक जगह पे छोड़ दोगे ना, हाँ, वो वैसा का वैसा ही रहेगा. इट विल नेवर, उसकी कभी कोई शाइन नहीं जाएगी, कोई फायर नहीं जाएगी, crazy, उसका कोई कलर नहीं जाएगा. crazy. अब द थिंग इज कि आई एम सॉरी, नो ऑफेंस टू वुमेन एंड गर्ल्स, व्हेन दे वेयर देयर ज्वेलरी, वो अपनी ज्वेलरी पहन के, यू नो, दे अप्लाई देयर मेकअप्स एंड प्रोडक्ट्स. Yeah. अब डायमंड्स आर मैग्नेटिक टू ग्रीस. आई टेल यू समथिंग वेरी टेक्निकल. Okay. डायमंड्स आर मैग्नेटिक टू ग्रीस. Hmm. मेकअप के अंदर, आपकी हैंड क्रीम्स के अंदर, आपके हैंड शावर्स में, यू नो, सोप्स के अंदर, Yeah, a lot of अब आप chemicals are उसी used. के साथ, वो केमिकल्स के साथ, यू आर वॉशिंग योर हैंड, यू आर अप्लाइंग दोस क्रीम, Hmm. a lot of dirt gets collected. Hmm. What happens is, jewelry में when dirt gets collected ना, तो वो आपको ऐसा लगता है कि वो उसके ऊपर लेयर आ जाती है, that it is getting, you know, कि उसकी वो शाइन नहीं आ रही है. Hmm. Then people need to understand, यार एक बेसिक wear and tear भी तो होता है. Hmm. You keep, आप अपनी ज्वेलरी को संभाल के रखो, wash it after some time. Let's say एकता कपूर के पास है ना बहुत सारी ज्वेलरी है, ठीक है, ठीक है, इतनी सारी ज्वेलरी है कि उसको उसके कलेक्शन उसको पता भी नहीं कि इतनी सारी है, राइट, एंड शी वेयर्स ऑल ऑफ देम. राइट. तो ये जो ज्वेलरी है, इसका लॉन्गर टर्म ज्वेलरी केयर कैसे करना चाहिए? हाउ डू यू क्लीन इट, हाउ डू यू कीप इट? कैन यू गिव अ स्मॉल बेसिक्स फॉर आवर women out there? See, I'll just give you two basic suggestions. Don't wear your jewelry and sleep. At times, a lot of women have a complaint about this कि ये चीज, you know, टूट गई, या इस बैंगल की supposedly shape मुड़ गई, हमारे सोल्टे की रिंग थी, वो बेंड हो गया. See, in the end, we need to understand jewelry is a delicate piece of Gold art. is malleable, yeah. ठीक है, we cannot be over rough with it. Yeah. आप सोचोगे कि हमारे से हमारी चीज गिर गई, Hmm. या जोर से कहीं पे हाथ लग गया, तो इसका डायमंड क्यों निकल गया, या इस पर डेंट क्यों आ गया. Hmm. We need to understand, we have to be a little delicate with the jewelry, Hmm. right? Another tip I'll give to the woman is, one, don't wear your jewelry and sleep with it. Second, avoid using makeup products and washing your hands wearing the jewelry. Okay. It will never get dirty. Hmm. It won't, उसकी कोई शाइन नहीं जाएगी, कोई उसका फायर नहीं जाएगा. It's gonna last long. Hmm. And third, if you ever think कि हमारी jewelry थोड़ी सी dirty हो गई है, my earrings are getting dirty or my ring is dirty, just put it into plain boiling water, Oh. leave it out for some time, Hmm. so that dirt melts out and leave Okay. the ornament. Okay. It's good to go. Okay. Yeah. Jackson, एक चीज है, lab grown diamonds, lab grown diamonds, lab grown diamonds. Yeah. So out there, ठीक है, पर मुझे और सबको एक चीज जाननी है. Right. So Jackson, the world, they want to know this, कि lab grown diamonds की एक्चुअली में क्या ही वैल्यू है और कितनी रह चुकी है.
सी लैब ग्रोन डायमंड्स की वैल्यू जो है वो वैल्यू उतनी ही है जितनी एक बेसिक फैंसी ब्रांडेड ज्वेलरी की होती है. Hmm. फॉर एग्जांपल स्वरोस्की हाँ. और यू वुड से वैन क्लीफ की जो हाँ. नॉट द डायमंड ज्वेलरी जो But synthetic diamond. सिंथेटिक डायमंड्स की जितनी एक एडी की जो होती है more अमेरिकन हाँ डायमंड की है, American diamonds. इसकी वैल्यू उससे बस थोड़ी सी ही और ऊपर है. अच्छा. नथिंग क्लोज एंड नथिंग कंपेयर्ड टू नेचुरल डायमंड्स. अच्छा. I'll give you a small example. A 10 carat diamond Hmm. in G color VS1 in natural diamonds, Hmm. I think it's not exactly calculated, but something around 2.7, 2.8 CR. Okay. आज आप 10 कैरेट का G color VS1 का lab grown का solitaire लो, it's only for like about 5 to 6 lakh rupees. Okay. So there is no comparison. Okay. That natural diamond, as an investment point of view, will always have a return. Okay. मैं कहता हूँ सपोज जितने का आपने लिया है Hmm. 5% डाउन द लाइन और वो you 3 can साल always पहले sell it. सेम प्राइस क्या था दोनों का? 3 साल पहले लैब ग्रोन का यही 10 कैरेट्स का डायमंड, why I remember exactly is because of I inquired this for a very close friend of mine. Okay. 10 कैरेट का HVS1 का हमने पीस मैंने अपने फ्रेंड के लिए पूछा था इन लैब ग्रोन, दैट वाज फॉर समथिंग अराउंड 30 लाख रुपीस. Okay. और वो आज क्या है? डायमंड आज रह गया 5 to 6 lakhs. Oh So my lab God. grown Oh in my itself is not holding any Yeah. value. And if you talk about natural diamonds के प्राइसेस भी काफी ड्रॉप हुए, God. Hmm. बट वो ड्रॉप इसलिए नहीं हुए बिकॉज इट्स नॉट considered to be a good investment. Yeah. वो इसलिए हुए because people started accepting more lab grown And- worldwide And actually it's not only and lab because grown. of demand and supply. Yeah, वो इंडस्ट्री का डायनामिक्स अभी जैसा चल रहा है. Yeah. And it's an economical part. Right. And natural diamond 3 साल पहले कितना था और अभी कितना है? Natural diamonds भी 3 साल पहले और आज के अंदर it has gone a drop of like about 30%. 30%. Yeah. And comparatively to lab grown, which has gone around 80% now. Yes, correct. Perfect. So we had this lovely conversation with Jackson. He gave us so many insights about diamonds. Thank you so much for your time. Thank you so much, Shan. Nice And talking to you yes, you too. and Hope to see you helping the consumers out there. Yes. Yes. Thank you so much for your time.